Good morning everyone. I am Dippy Chaudhary, Assistant Professor of Health Informatics Institute. Today's topic is Healthcare Information System applications. So there are different type of application which is used to deal with the health data, health services and healthcare management. So first one is Medical Practice Management System. This is the health information technology system which is needed for a health organization and a hospital for medical practices. The medical practice management system forms an integral part of the healthcare system. It takes care of different administrative and clinical aspects of your practices. It is geared towards the facilities, clerical work such as managing various documents, scheduling appointments and more. It automates and streamlines multiple activities which make it easy to run the facilities smoothly. Medical practice management software generally doesn't include patient medical data. Okay, medical practice management system, what the medical practice management system is stored. It is stored the information about documentation, patient clerical works, scheduling appointments, but in a medical practice management system doesn't have any patient medical record. इट मीन्स आप जितने भी क्लरिकल वर्क होते हैं, शेड्यूलिंग होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उन सब की डिटेल्स जो होती है, उन सब की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस सॉफ्टवेयर में होती है, इस एप्लीकेशन सिस्टम में होती है, लेकिन पेशेंट से रिलेटेड कोई भी मेडिकल डेटा इस सिस्टम में, इस एप्लीकेशन में स्टोर नहीं होता है. However, it does take care of insurance claims रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी इसमें स्टोर होती है. इट ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्लेम, हैंडल्स बिलिंग एंड पेमेंट एंड ऑल्सो जनरेट रिपोर्ट्स. फॉर जनरेटिंग रिपोर्ट्स फॉर बिलिंग, दिस सॉफ्टवेयर इज नीडेड इन अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन अ हॉस्पिटल. टू लिस्ट आउट सम ऑफ इट्स बेनिफिट्स, व्हाई ऑटोमेटिंग routine clerical task, it allow you to concern more on the quality of patient. इट मीन्स अगर किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल में ये सॉफ्टवेयर है या ये एप्लीकेशन सिस्टम है तो उससे क्या होगा कि पेशेंट केयर एंड मेडिकल केयर मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा. बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रेट जो होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज वी डील ऑल टाइप ऑफ टास्क विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. It give you easy access to healthcare data. You can view all the documents online. With the help of this system, with the help of this application, what we can do? We can view all the documents online, but not medical record of any patient. Data related to documentation, related to billing, related to clerical tasks are available in this system. Now second one is EHR, electronic health record. Electronic health record is a primary tool, is a primary digital tool, is a primary step of health informatics. Electronic health record is another type of hospital management information system that is basically concerned about the patient medical information. In EHR, what type of data is stored? Patient medical data are stored in EHR, electronic health record. Earlier, doctors or nurses had to document every medical details of their patient on paper. पहले क्या होता था कि जितने भी डॉक्टर और नर्सेज थे वो पेपर पे प्रिस्क्राइब करते थे, पेपर पर मेडिकेशंस प्रोवाइड कराते थे. बट नाउ पेपरलेस वर्क करने के लिए हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने EHR को इम्प्लीमेंट किया है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में. Medical details of their patient on paper, but now they can simply fill out all the information on the EHR system. Now they fill all the information about any patient which has particular disease related to patient. Information is stored in EHR system. The best part is that it can be accessed instantly using a mobile or computer.
ओके, सो ऑब्वियस मोबाइल एंड कंप्यूटर्स के थ्रू हम पेशेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. It also enables doctors to easily share data across different departments, allowing them to provide quick and accurate treatment. With the help of EHR, doctors can share the information about a particular patient from department to department, so the time consuming period is less than. It deals with the data management, which generally contain information on patient medical history, allergies, laboratories, charts and more. EHR सॉफ्टवेयर में पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसके थ्रू अगर पेशेंट ने पहले भी अगर कभी विजिट की होती है तो उस पेशेंट आईडी के थ्रू उसकी जितने भी डायग्नोसिस है, उसका जितना भी डेटा है वो सब एक डॉक्टर क्विकली एक्सेस कर सकता है और उसको एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकता है. Some of the benefit of implementing EHR include it increase efficiency by eliminating paperwork and giving immediate access to the patient data. So first benefit is paperless work. It improves the quality of patient care as the same information is shared across all departments, avoiding any medical error. With the help of EHR, what we can do? We can remove the errors related to the errors with the information about patient. So what the accurate data, accurate information we can access with the EHR. Some of the type of electronic health record are CureMD, Care 360, etc. Now third one is e-prescribing software. So e-prescribing software is a software which is used to prescription by doctors. So with the help of e-prescription, what the benefit? There are different type of benefit. First of all, lack of time, and second thing is save from queue. It also then e-prescribing software is a beneficial technology as it enables doctors to generate prescription electronically. With the help of this software, doctors prescribe the medicine in online way, not in a paper. It allows them to directly send prescription. So doctor directly send prescription to the pharmacy in just a few clicks, and when the patient gets there, एंड जब पेशेंट वहाँ फार्मेसी पे पहुँचेगा तो उसकी मेडिसिन जो है वो ऑलरेडी स्टॉक से लेकर रेडी उसको मिलेगा. सो उससे क्या होगा, पेशेंट जो है वो एक लंबी लाइन में लगने से बच जाएगा और उसको प्रॉपर विदाउट एनी एरर जो मेडिसिन हैं वो मिलेंगी. कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को हर कोई नहीं समझ पाता, इवन पेशेंट तो समझ ही नहीं पाता है. सो अगर हम वो ऑनलाइन वे में करेंगे तो ईजिली वो रीडेबल होगा, उसको ईजिली अंडरस्टेबल हो जाएगा. द सिस्टम एलिमिनेट्स द नीड टू क्रिएट हैंड रिटन नोट्स. सो इस सिस्टम के थ्रू क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स पेपरलेस वर्क हो जाएगा, विच आर जनरली हार्ड टू एन इंस्टेंट जनरेट एन अंडरस्टेबल प्रिस्क्रिप्शन. प्लस देर इज नो प्रिस्क्रिप्शन मिक्सअप. Pharmacist ensure patient safety by giving them the correct one. It also eliminates the chances of misplacing a prescription. The advantage of using e-prescribing softwares are, so it allows medical providers to send prescription directly to pharmacies without the risk of getting misplaced. It gives quick and easy access to a patient medication history with the help of pharmacy database. So in pharmacy database, what kind of data are there? Related to prescription of patient. So we can easily access the prescription whenever we want. Now fourth one is remote patient monitoring. So remote patient monitoring is also a part of a digital health
and with the help of remote patient monitoring, the patient and doctors distance are covered from with the telehealth services. Thank you so much.